Hi, my friends. Welcome to Anjanaya Academy, Learning German with Ritu. And today we are going to most awaited topic, perfect, past tense. In this, many students face problem. इस वीडियो में हम पास्ट टेंस सीखेंगे जर्मन में जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। इस लेसन प्लान के बाद ऑल डाउट्स विल बी क्लियर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। So first what I have done, I will share what's in it for you। इस लेसन प्लान में आप क्या क्या सीखेंगे। फर्स्ट मैं आपको 50 कॉमन रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स की पास्ट टेंस इंग्लिश मीनिंग के साथ में आपको मैं क्या दूंगी, लिस्ट दूंगी। सेकेंड, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी 5-6 एग्जाम्पल्स के प्रेजेंट को पास्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नो बडी इज गोइंग टू मिस इट। एंड प्लीज नाउ स्टार्ट मेकिंग नोट्स एज वेल पैरेलली व्हेन आई एम टीचिंग। ओके, सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट वन। माखन। माखन मीन्स टू डू। माखन का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट वर्ब आई हैव टेकन इज माखन। I will convert one present tense into past tense. So, Makhan is the first example. Makhan means to do, कुछ करना. Past tense of Makhan is hart gemacht, perfect. What is it? Hart gemacht. So, hart is the helping verb. We call it as helping verb. I am writing HV. और ये क्या है आपकी पास्ट फॉर्म, perfect. So now we will make one sentence using Machen in present tense in German. Ich mache die Hausaufgabe, meaning I do the homework. Ich is the subject and position is number 1. Mache is the verb and it is position number 2. Article is the and accusative object is Hausaufgabe. अगेन मैं हिंदी में भी बताऊंगी। आई टेल यू इन हिंदी ऑल्सो। माखन का मतलब होता है कुछ करना, टू डू। पास्ट टेंस फॉर्म क्या होती है? हार्ट गेमार्क्ट। हार्ट इसमें हेल्पिंग वर्ब है, गेमार्क्ट आपका पास्ट टेंस है। सो इश माखा दी हाउस ऑफ काबा, मैं अपना होमवर्क कर रही हूं। इश इज द सब्जेक्ट। इश क्या है? सब्जेक्ट, जो कि नंबर 1 पोजीशन। माखन, माखा वर्ब, इश के साथ में क्या लगेगा? माखा, ई एंडिंग, दैट इज द वर्ब, सेकेंड पोजीशन। आर्टिकल है दी और हमारा अकुजाटिव ऑब्जेक्ट। इसमें दो चीजों के बारे में बात हो रही है, आई और होमवर्क। मैं और होमवर्क। मैं बन गया नोमिनेटिव सब्जेक्ट, होमवर्क बन गया अकुजाटिव ऑब्जेक्ट। ओके, सो इश माखा दी हाउस ऑफ काबा। I hope present tense is clear to everyone now. Now, how to change it into past tense? Past tense, what is there in the past tense? It is very easy. Ish will remain same. Okay. Like you can see, ish is same. I'm making dots. Okay, just a minute. I'm using the permanent marker. Ish is same in past tense also. No difference. D is also same. House of Kaaba is also same. You will write as it is. See? What is the change? Change क्या हो रहा है? Verb. In this, marker was written at second position in perfect. In second position, we write the helping verb. What is the helping verb? Heart. I have changed heart according to age, so it will be harbor. मैंने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब हार्ट था, मैंने हार्ट को क्या किया है? इसके साथ कॉन्जुगेट करके हार्बर लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब, सेकंड नंबर पोजीशन। Past tense form of machen is gemacht. That you will write before full stop. Last में लिखना है आपको, full stop से पहले। इसमें चेंज नहीं होता है कुछ भी।
Helping verb number two, participes y, past tense form before full stop, last. It will go in the end. So, present was ich mache die Hausaufgabe, and what was the past tense? Ich habe die Hausaufgabe gemacht. I have done the homework. Haben, helping verb number two, participes y or perfect goes at the end. That is the rule. आपको और कुछ नहीं याद रखना है. Verb position was second in present tense. Ich mache. Past tense. Ich habe. Hart gemacht. So habe will come in second number. Helping verb. Participes y at the end. Last में लिखना है participes y. This form gemacht will always be gemacht. Er hat die Hausaufgabe gemacht. Ich habe die Hausaufgabe gemacht. Wir haben die Hausaufgabe gemacht. Sie hat die Hausaufgabe gemacht. Only this helping verb will change. Helping verb को हम conjugate करते हैं. Participe y remains as it is. Participe y change नहीं होगा, वो same रहेगा. It will not change. So habe, second number. Ich habe, er hat, sie haben, wir haben, ihr habt. Okay, you will write. And gemacht will go at the end. Okay. So what is the rule? Verb present tense I've written also. Verb position number two. Perfect. Helping verb position number is two and past form of the verb is at the end. Past tense of the verb will never change. Note down this example now. नोट करेंगे. मैं इरेज कर देती हूँ. ये कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट. जस्ट आपको वर्ब पोजीशन का ध्यान रखना है. इट्स लाइक मैथ्स. In present tense, the verb number is two. In past tense, we'll write number two as helping verb and at the end past form. That's it. Done. Okay. So now we'll move to the next example. Example number B. See, same rule. Very easy. Trinken. Trinken meaning is to drink. कुछ पीना. Hat getrunken is the past form. Past form list I will give. You have to learn. Past form verb आपको जो है पास्ट फॉर्म्स इसी लेसन प्लान में आपको मिल जाएंगी, जो आपको याद करनी होंगी घर पे नोट कर. ओके. सो trinken, hat getrunken. Trinken means to drink. Trinken, to drink. Hat getrunken. Now present tense. He drinks the cola. वो कोला पी रहा है. Er trinkt die cola. Okay. Er trinkt die cola. So with er, what comes? The verb. So verb is there with er. So verb number two, er trinkt. Okay, er trinkt the cola. Verb position number is two. And er में क्या conjugation आएगी? T ending. With er we use T ending. तो त्रिंकन जो वर्ब है वो हमने नंबर दो की पोजीशन पे लिखना होता है. त्रिंकन वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे. एर के साथ में क्या आएगी एंडिंग? टी एंडिंग. ओके. सो एर त्रिंक्ट हो जाएगा. दी कोला. दी कोला इज द कोला. So in this sentence we are talking about two things, air and cola, he and cola. वो और कोला, दो चीजों के बारे में बात हो रही है. We are talking about two things, he, cola. So he will become the subject, cola will become the object. It is accusative sentence. And in this, verb is number two position. Now perfect, what is past tense? How to convert the same into past tense? Air is same. Subject will remain same at number one position.
The and cola will also come in third and fourth. Okay, same. What is the change? Number two, in present tense, we write verb. And in past tense, at number two, we will write helping verb. Helping verb of Trinkan is heart. Okay, this is your helping verb. Write it. Helping verb. And this is your past form, participes y. So this helping verb will go to number two position. With air, we will write heart. With the ish, we will write harbor. With wear, we will write haben. And this participe y, pepe y will go at the end. Okay. So, er hat die Cola getrunken. इसमें और फर्स्ट वाले सेंटेंस में आई एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो नाउ. फर्स्ट वाले सेंटेंस और सेकंड वाले सेंटेंस में अंतर क्या है? पहले वाले सेंटेंस में हम वर्ब नंबर दो पोजीशन पे रखी थी. परफेक्ट में हमें नंबर दो पोजीशन पे क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ब. हर एक पास्ट फॉर्म के वर्ब के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी. हाबन या जाइन होती है. त्रिंकन की फॉर्म क्या है? हाबन. तो एर के साथ क्या आएगा? हार्ट. अगर मैं इश लिखती हूं तो हाबन लिखना पड़ेगा आपको. अगर वियर लिखा है तो हाबन लिखना पड़ेगा. कॉन्जुगेट करना पड़ेगा सब्जेक्ट के मुताबिक. तो प्रेजेंट और पास्ट में सब्जेक्ट सेम रहेगा. सेकंड नंबर की पोजीशन वर्ब नहीं, हमें हार्ट लिखना है. एंड एट द एंड And at the end, what we will write? Participe y position. Getrunken. Again, I am telling for the third time. In present form, we write verb as second position. And we will conjugate that also. In past tense, second position, you will write helping verb. And participe y goes at the end. Remember this rule. This is your rule book. Remember this rule, guys. So please note down example number 2. Then I will move to example number 3. Now I'm showing you example number 3. So number 3 is spielen. Spielen. Spielen means to play. Perfect. Hart gespielt. Repeat after me. Hart gespielt. Hart gespielt. So, what will be the present form? We are playing tennis. हम टेनिस खेल रहे हैं. So, where will be the first position? Spielen second verb position and tennis is the past form. So, this is again accusative sentence. We are spielen tennis. Accusative sentence है. Where क्या है? Subject. Spielen है verb. Object है tennis. Okay. Simple verb position in present. What is the rule? In present, verb position is number two. Now past tense. We'll now practice perfect. What is the change? Helping verb will come on number two position and participe y at the end. So where is same. Subject is number one. No change in subject. Subject is always number one. Now number two is verb. But in perfect, what do we use? What is the helping verb for spielen? Heart. So this heart will come at the second number.
So with wir, what do we write? Haben. Wir haben, we will conjugate. हार्ट क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब आपका परफेक्ट में, यानी कि पास्ट टेंस में आप नंबर दो पे वर्ब नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। सो वियर के साथ में क्या आ जाएगा? हाबन। इश के साथ में क्या आएगा? हाबर। सो नंबर टू पोजीशन इज हेल्पिंग वर्ब, and participes y is gespielt, past form is gespielt. So this is as it is at the end. I'm so sorry, gespielt is not written. I'm just correcting it. It will be, I'm writing it here. Please make correction. Gespielt. Note it down. So present, verb position number two, perfect, helping verb number two, participes y at the end. Moving on to the D point, schreiben. Schreiben is the verb which means, let me just erase it. मैं इसको इरेज कर देती हूँ, नहीं तो दिखाई नहीं देगा, आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। And I don't want your time to be wasted. I know you are giving time to watch and trying to understand German. Okay, now it's neat and clean. Let me use some other color first. Okay, I'm using a green one. Okay, so schreiben means to write, कुछ लिखना. Perfect, hat geschrieben. Helping verb is hat and geschrieben is past form. Okay, geschrieben is your past form. So presence, one sentence in present. Tina schreibt den Brief. Tina is writing a letter. Okay, Tina is writing the letter. So Tina is your subject. Verb is schreibt. What is the verb? Schreiben. So Tina is third person. Two people are talking about Tina. So T ending, RZS conjugation. Tina schreibt den Brief. टीना क्या लिख रही है? एक पत्र। टी एंडिंग क्यों लगा है इसमें? टीना क्या है? थर्ड पर्सन, ही शी इट में लेंगे, दो बंदे तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। सो टीना schreibt den Brief. So verb is number two and it is an accusative sentence. What is it? It is an accusative. Let me just write it. So it is accusative, guys. Subject, one subject and one object. If accusative is not clear, please watch my lesson plan on nominative, accusative and worksheet number 1 and 2. You everything will be clear. सब कुछ क्लियर हो जाएगा अगर आपको अकुजाटिव नोमिनेटिव नहीं आता समझ में। डू वॉच अकुजाटिव नोमिनेटिव लेसन प्लान्स विद वर्कशीट्स followed by worksheets. So Tina schreibt den Brief, verb position number two, and past tense में we'll write helping verb. What is the helping verb? Heart. So heart will go as second number in perfect, and this past form will be coming at the end. So with wir, we will write haben. And if Tina is written, if I have to convert, let's say Tina, then what will come? Helping verb will be heart. So Tina schreibt den Brief. Tina hat den Brief geschrieben. But if you want to say we are writing the letter, अगर हमें बोलना है हम लेटर लिख रहे हैं, तो wir schreiben den Brief, wir haben den Brief geschrieben.
So this helping verb will change as per subject. Please note down. And this will not change. It will remain same always. It will not change. Also same thing I've written in the box. मैंने बॉक्स में भी बिल्कुल सेम थिंग लिखी है. Present verb position number 2. Helping verb in past tense position number 2. Past tense form at the end. Past tense form of verb always remains the same. Okay, it is not change, it is same. It always remains the same. Please note down this example. So, helping verb we have to conjugate. In present tense, again I am saying verb position number 2. In perfect, helping verb comes under 2 position. Past tense form goes at the end. Helping verb will change. Past tense form never changes. Now I am moving to the another example. Faharan. Faharan is to give faharan. Faharan means drive karna, travel karna. So faharan is to drive or to travel. Past form of faharan is to give faharan. Is to give faharan. This is the sein verb. 10% of the verbs have the sein helping verb. You have to learn the list that I will provide you towards the end of this lesson plan after this example. So stay here and understand the rule of sein verb also. So same present tense sentence I made. मैंने present tense sentence बना दिया है. इश फाहरनाक शिमला. I drive to शिमला. मैं शिमला में मैंने drive किया या travel किया. So ish is the subject, verb number 2 position, preposition. Nakh is preposition. It is a dative preposition and Shimla is again the object, accusative. Now this is dative because Nakh is the dative preposition. So dative topic is also covered by me. In what all cases a sentence can be covered as dative in A1 lesson plan 21. Okay. Now past tense, perfect. Ich bin nach Shimla gefahren. So helping verb is ist. Only helping verb changes. So past tense form, second position, bin. Ich bin. And gefahren is at the end. Gefahren. So ich fahre nach Shimla present. Ich bin nach Shimla gefahren. Perfect. Past tense. If अगर यहां पर वियर लिखा होगा, if वियर is written, then it will be sind. Wir sind nach Shimla gefahren. ओके अगर वियर लिखा है तो जिंद आएगा. इश लिखा है तो बिन आएगा. इफ इट इज ईयर, यू ऑल, तुम सब. ईयर जाइड nach शिमला gefahren. ओके दिस इज हाउ you need to conjugate. If ear is written, you will write zaid. If wear is written, you will write zind. If ish is written, you will write bin. Second number helping verb in perfect. Participes y past tense form at the end. Helping verb changes. This will change. And participes y always remains the same. It will not change. It will not change. So, participes y not change. Helping verb changes as per subject.
Note it down now. I'll also erase what I have highlighted so that you can write neatly. Please make such diagrams. What I also do, it makes you help to learn easily. When I was a student, I used to do it. So जो मैं ये ग्रीन कलर से ये डायग्राम्स बनाती हूँ साथ में समझाती हूँ, ये आप भी बनाया करो अपनी नोटबुक में. हैव स्केच पेन्स मार्कर्स व्हेन यू सिट इन द क्लास. ये आपको जल्दी लैंग्वेज सीखने में हेल्प करेगा. जब मैं स्टूडेंट थी मैं हमेशा ऐसे ही करती थी एंड इट हेल्प्ड मी. टुडे आई हैव डन पीएचडी एंड C2 लेवल. सो ये डायग्राम्स बहुत हेल्प करते हैं. ये हमारे टीचर ने हमें सिखाया है इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं. ओके, सो अगेन लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल्स क्विकली. Machen hat gemacht. Ich mache die Hausaufgabe Präsenz. Ich habe die Hausaufgabe gemacht. Perfekt. Trinken hat getrunken. To drink. Präsenz. Ich trinke die Cola. He drinks the Cola. Perfekt. Hat die Cola getrunken. Past. Okay, he drank the cola. So in present form, verb position number two, past form, helping verb number two, past form at the end. Fahren ist gefahren, to travel or to drive. Ich fahre nach Shimla. I travel or drive to Shimla. Haben is the verb is fahren number two. Perfect helping verb is ist. So with ist you will write bin and gefahren at the end. Ich bin nach Shimla gefahren is the perfect Satz. Okay, spielen hat gespielt. Wir spielen Tennis. We are playing tennis. Spielen number two, present tense. Wir haben Tennis gespielt. Haben, helping verb number two position. And participle zwei, gespielt. I corrected that, please correct. Gespielt will go at the end. Schreiben hat geschrieben, not schreiben, please take care. It is geschrieben. So present tense, Tina schreibt den Brief. Tina writes the letter. Verb number two. Perfect. Wir haben den Brief geschrieben. Helping verb number two position. PP form, past tense form, geschrieben before full stop. I hope is that clear. Uh, after this lesson plan, I will be uploading the common mistake people do while making past tense sentences and we'll do a worksheet also. इसके बाद में मैं नेक्स्ट लेसन प्लान एक और डाल रही हूँ. यू कैन फाइंड इट ऑन माई यूट्यूब चैनल वेयर इन वी विल आइडेंटिफाई द कॉमन प्रॉब्लम्स. जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं और द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट अ स्टूडेंट फेस while मेकिंग past tense sentences, the common mistakes, and we'll do one worksheet as well. Okay, so here you go. This is your first past tense list from my end with most common verbs to cover your A1 and A2. Okay, please note it down. 1 to 17. Machen, hart gemacht, spielen, hart gespielt, kaufen, hart gekauft, lernen, hart gelernt, then arbeiten ist hart gearbeitet. You have to learn this list. There is no way out. आपको ये लिस्ट याद ही करनी पड़ेगी. Fragen, hart gefragt, antworten, hart geantwortet, sagen, hart gesagt, hören, hart gehört, essen, hart gegessen, trinken, hart getrunken, schreiben, hart geschrieben. Write the spellings. Pause the video, write the spellings clearly. Spellings को ठीक लिखना है. Lesen, hart gelesen, finden, hart gefunden, bringen, hart gebracht, denken, hart gedacht, verstehen, hart verstanden.
नोट इट डाउन. पॉज द वीडियो एंड राइट. पॉज करेंगे और लिखेंगे. Okay, now this is the another followed another list. 18 to 36. Schlafen, hart, geschlafen. To sleep. Sitzen, hart, gesessen. Stehen, hart, gestanden. Beginnen, hart, begonnen. Bekommen, hart, bekommen. Verlieren. What is verlieren? Verlieren is टू टू लूज समथिंग, किसी चीज को खो देना. ओके, सो verlieren is hart verloren. Gewinnen, hart gewonnen, to win. Helfen, hart geholfen. Warten, hart gewartet. Kochen, hart gekocht. To cook. Kochen is to cook. Suchen, hart gesucht. It is not suchen. It is suchen. Zahlen, to pay. Bezahlen also we say to pay. Zahlen generally means to count. Besuchen, hart besucht. तो ध्यान देना है, किसी में सेम भी आ जाता है. सो यू हैव टू लर्न दिस लिस्ट. Wohnen, hart gewohnt. Erzählen, hart erzählt. Telefonieren, hart telefoniert. Feiern, hart gefeiert. To celebrate. Hart gefeiert, celebrated. Verstehen, hart verstanden. Verstehen, to understand. Verstanden, understood. समझ आ गया था. Now please note this also. Pause the video and you can pause 18 to 36. If you're liking my video and you have stayed on the video and you think that इसमें informative content है, don't forget to subscribe my channel and watch the other related informative videos on my channel related to A1, A2, B1, B2s. Okay, we are moving to next one. Verkaufen. Verkaufen, hart, verkauft, to sell. Kosten, hart gekostet. Probieren, hart probiert. Reisen ist gereist, to travel. So these all are generally the ist forms. I've written at the end so that it is easy for you to learn. Gehen ist gegangen. Kommen ist gekommen. Fahren ist gefahren. Laufen, fliegen ist geflogen. So if you will see, whenever there is a movement, we are using ist as sign verb. But obviously exceptions are there like bleiben. But this is one of the rules. Generally 80-85% movement, then we will use sein helping verb. सो आपने देखा होगा इसके अंदर हमने इस्ट यूज किया है और इन सब में क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है. चलना, आना, ड्राइव करना, उड़ना, तो स्विम करना. तो इसमें क्या है, जब भी मूवमेंट होती है जनरली, सो वो 80-85% हमारा जाइन वर्ब होता है. लेकिन ब्लाइबन इज टू स्टे, और ये एक एक्सेप्शन है कि फिर भी इस्ट आ रहा है तो हमें याद करना पड़ता है. बट यस, मूवमेंट होता है तो जाइन वर्ब आ जाता है. For these only. Don't write anything without learning. Don't use your logic. You have to learn the past tense list means have to. I've also done it. Please do. So, laufen ist gelaufen. Schwimmen ist geschwommen. Bleiben ist geblieben. Aufstehen ist aufgestanden.
Einschlafen, separable verb, ist eingeschlafen. Passieren is passiert. What happened? What happened? Past tense. So with this, I'm coming towards end of my video. And if you want to practice the past tense, okay, apne list, you have made a list, but you don't know how to use them more in the past tense, like I've given the examples earlier, 5 examples I covered, then watch my next video, which includes the worksheet, and we are converting present to perfect the sentences for both sein and haben helping verb. Okay, it will give you help to make sentences by yourself. सो आपने अभी लिस्ट बना ली है, लेकिन अगर आपको अभी भी थोड़ा सा लगता है कि डाउट है, वॉच माई नेक्स्ट वीडियो वेर इन आई एम कवरिंग, मैंने वर्कशीट दिया है, अगेन एग्जाम्पल्स में समझा रही हूँ, प्रेजेंट को पास्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वर्ड बाय वर्ड क्लियरली, जो आपको आगे हेल्प करेगा खुद से सेंटेंस बनाने में. Yeah. At the end, obviously, I would like to thank you all for watching my video. And if you find my content useful, don't forget to subscribe. Do write in comments how you are liking my videos, which should be the next topic I should upload. And watch other related content which will help you to clear A1, A2, B1, B2 in German. And you can have a good career. Till then, take care. Bye bye.